बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ साद छोटानी। आप लोगों को खुशामदीद। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि आज के इदारे, आज की ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं, उनमें से एक ये है कि इदारे के लोग इंगेज्ड नहीं हैं, इदारे के लोग काम के साथ मोटिवेटेड नहीं हैं, इदारे के लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो आज हम इंशाल्लाह अपनी इस डिस्कशन में इस टॉक में बात करेंगे कि किस तरह हम एम्प्लॉय इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन थिंग। तो उस रेसिपी तक पहुंचने के लिए, उस सीक्रेट तक पहुंचने के लिए, लेट्स फर्स्ट डिस्कस द डायनेमिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टुडे। एक रिसर्च बताती है कि यूएस के अंदर वर्कफोर्स जो है उसका 50% जो हिस्सा है दैट कंसिस्ट ऑफ जेन जी एंड द मिलेनियल्स। अब ये मिलेनियल्स और जेन जी वो हैं जो कि 1980 के बाद बोर्न होने वाली जो है जनरेशन है। ये लोग मोर और लेस तकरीबन अंडर 40 इस वक्त जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। वो लोग जो अंडर 40 हैं, एंड मेनली इनमें से ज़्यादातर पोर्शन जो है वो 30 एंड बिलो का है। अब ये वो सेगमेंट है या ये वो कोहोर्ट है जो कि जिनकी नीड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, जिनके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, या जिनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। Comparing Gen Z and millennials with the earlier generations, which is Gen Y and Gen X, वो लोग एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। उस वक्त शायद इंटरनेट का दौर नहीं था, उस वक्त शायद हालात मुख्तलिफ थे, उस वक्त शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था। अब आईटी और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का टाइम है। तो अब वर्क प्लेसेस बिल्कुल डायनामिक हो चुकी हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं, एंड आज लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं और they're finding work all around the world, or people are making money in all sorts of different ways. So वर्क प्लेस का डायनामिक बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, लिहाजा हमें इसको देखते हुए एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा कि आज के एम्प्लॉय की नीड क्या है। नाउ कमिंग टू पाकिस्तान, तो आई डिड सम रिसर्च एंड वी फाउंड आउट दैट more than 60% of Pakistani workforce is either Gen Z and millennials. तो जब आपकी majority of the workforce is coming in this kind of cohort, and if I talk about the behavior of this kind of cohort or the people which comes under millennials and Gen Z, ये वो लोग हैं जिनको straight away they're looking for well-being, they're looking for creative work, they're looking for more authority, they're looking for more empowerment, they are the future leaders, they are the more aware audiences, because they are connected with the world, with the rest of the world through digital mediums. They are the users of social media. अब ये चीज़ जेन जी और मिलेनियल्स तो यूज़ करें, बट साथ ही साथ अब जेन एक्स और जेन वाई भी जो है वो आपकी सोशल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस उनकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से किसी हद तक ये बिहेवियर्स अब वो भी जो है वो एडॉप्ट कर रहे हैं। बट स्पीकिंग ऑफ द जेन जी, जनरेशन जी एंड मिलेनियल्स, these are the people who are looking for an environment where they are treated as adults. So if you want to have your workforce to be more productive, to be creative, you want to make them feel like adult in the organization, in the environment. You have to create the environment where they feel that they have the authority or they have the empowerment for the work, and they should be recognized for the work that they are doing. अब ज़रा इससे हटते हैं और बात करते हैं वो तीन एस्पेक्ट जो कि हर इदारा अपने लिए अचीव करना चाहता है। एंड ये चाहे एक बड़े साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन हो, मोर और लेस हर ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं तीनों चीज़ों के लिए काम करता है, और इनके लिए वो अपने एफर्ट्स करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक इदारा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए काम करता है। एक इदारा अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इनोवेट करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए काम करता है। और तीसरी चीज़, एक इदारे की कोशिश ये होती है कि अपने लोगों की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करे, अपने लोगों को एक्सेलेंस की तरफ लेके जाए, अपने डिसीजंस को सस्टेन करे। और ये तीन चीज़ें कंबाइन इदारे को उसकी सक्सेस या उसके विजन तक लेके जाती हैं।
Number one is profitability, number two is the better products and better services, and number three is the productivity of the employees. Ab, let's talk about each one of them individually. Profitability is dependent on the product and services that an organization is making or offering to their customers. अगर products और services up to the mark नहीं हैं, updated नहीं हैं, या they are not customer driven, then they tend to fail at a certain time, and then other products will replace it, or other companies will overcome other various companies. जैसे नोकिया के साथ हुआ, they did not innovate in the timely manner. जैसे ब्लैकबेरी के साथ हुआ, they did not innovate, they did not come up with the timely manners, and there are several examples that I can quote here. लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी को लेना बेहद इम्पॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू क्रिएट timely innovative products and services, and it all boils down to just one thing, and that is productivity and creativity. अब प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी उस वक्त अचीव होती है कि जब आपकी वर्क फोर्स एंगेज होती है, जब आपकी वर्क फोर्स सेटिस्फाइड होती है। जब आपकी वर्क फोर्स सेटिस्फाइड नहीं होगी तो आप चाहे जितने जतन कर लें, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती, आपके प्रोडक्ट्स में क्रिएटिविटी नहीं आ सकती, आपके प्रोडक्ट्स रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होंगे, दे विल नॉट टेक द ओनरशिप ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग, दे विल ऑलवेज। और इसी वजह से एक डिलेमा आज के दौर में हमें देखने को मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर कंपनीज बिग और स्मॉल, दे वांट टू हैव समथिंग ऑफ देमसेल्व्स, और साइड गिग जैसे हम कहते हैं, कि जिससे उनको एम्पावरमेंट मिलती है, जिससे उनको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है, अचीवमेंट फील होती है। अगर तो ये चीज़ इदारे अपने लोगों को इंडिविजुअली स्टिमुलेट करे, या इंडिविजुअली उनको ये फील करवाए अपने कल्चर्स के थ्रू, अपने प्रोसेस के थ्रू, अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू, तो किसी हद तक इस डिलेमा को हम अचीव, या इस डिलेमा को हम सॉर्ट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इदारा इसके लिए काम नहीं करता, देन there is a possibility that the people working for that organization, especially Gen Z and Gen millennials, they will be disengaged from that organization, and the products they will produce will not be innovative, will not be creative, they will not take ownership of the work, and ultimately the profitability in the longer run will be affected. Acha, now let's come to the solution of it. This is a very, very simple solution, as I have also said earlier, that we must treat our employees as adults. Employees today want to be led with less direction, with less authority. They should be given more authority, more empowerment for the work, and then they should also be held accountable for the results that they are achieving with the help of the creativity that they are putting in their work, and the initiatives that they are taking. They should be held accountable, but that does not mean that they should be given directions all the time. Just with the help of creating an environment of trust, employee engagement can be drastically improved. Now there are way too many tools, dime a dozen tools to actually create engagement. Some will say trainings will create engagement. Yes, it helps. Some will say giving employees bonuses, incentives for the performance will create, but all of these tools will play a temporary role into giving employees a boost of satisfaction, but will not solve this problem in a longer run. If an organization wants to solve this problem of engagement in a longer run, leaders must start trusting their people. In a book that I was reading a few days earlier, it's called Managing by Values. There is a quote that goes that if we want to be successful in employees engagement, then we must make the communication amongst supervisors and the subordinates secure, safe, that people should be able to come up and discuss their feelings, their emotions, and they should be feeling safe with that.
there should not be a feeling of hesitation. If there is a feeling of hesitation amongst employees that whenever they come and they discuss things, uh, they will be judged on that or they will be questioned on that, then there is a failure of communication. This needs to be sorted firsthand if an organization wants to create a culture of trust. I'll share with you a very interesting, you know, research that happened just a few years earlier, which were to study the effects of trust and the humanly bodily emotional changes that occurs when someone trusts the other person. What happens when someone trusts, or what bodily changes that occurs in a human body. तो क्या होता है, तो उसमें एक रिसर्च की गई और ये पता लगा कि जब कोई किसी पे ट्रस्ट करता है या इदारे के अंदर जब आप एक ट्रस्ट का कल्चर डेवलप करते हैं तो उससे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इट गेट्स रिलीज इन द ह्यूमन बॉडी। एंड ऑक्सीटोसिन का काम ये है कि वो एक पेन किलर की तरह का काम करता है, एक रिस्क को मिटिगेट करता है या रिस्क लेने की एबिलिटी को क्रिएट करता है या क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है ऑक्सीटोसिन। इस तरह और कई केमिकल्स हैं, बट मेनली ऑक्सीटोसिन का जो एक हाइक था या उसकी जो सिक्रीशन थी इन द ह्यूमन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, that was observed when someone was trusting. And when you were to reduce the trust, और इसका कॉन्ट्रा भी उन्होंने रिसर्च किया एंड दे फाउंड आउट दैट जैसे ही ट्रस्ट को का लैक ऑफ ट्रस्ट आया तो उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन लेवल्स started to decline, and then risk started to come up and people started to hesitate more to share, to collaborate, to trust in teams or to trust amongst their peers over their projects, over the tasks that they were doing together. So trust mainly is the way to engage the staff, engage the employees to be more productive, to be more collaborative, to be more creative in the work. And just by introducing the word trust amongst people through the interactions, through interpersonal interactions, through culture, through processes, through through tangible and intangible ways to motivate employees, then organizations will be more productive, organizations products will be more innovative, will be more customer driven, will be more relevant to the time, and then ultimately the organization is going to achieve more profitability and achieve more success amongst, and will be more competitive in the world. So guys, this was today's video, today's message. I hope you've liked it. If you have enjoyed today's message, please do share, please do like, and I'll be waiting for your comments if you have any. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।